Good afternoon, everyone. This is the seventh chapter, Understanding Data. So, what is data? Data means what? Many times people take decisions based on certain data or information. For example, while choosing a college for getting admission, one looks at placement data of previous years of that college, educational qualification and experience of the faculty member, laboratory, hostel facilities, fees. These are the data for what? For taking the admissions. Okay, and different documentations we required. For what we require different documentation for taking the admissions. Then again next one is what? Census data contains valuable information which are helpful in planning and formulating policies. Likewise, the coaching staff of sports team analyzes previous performances of opponent teams for making strategies. Okay, this is also one of the data. Then banks maintain data about the customers, right? Then account details, transactions is also data. All these examples highlight the needs of data in various fields. Data are indeed crucial for decision making. For decision making, data is very important. So in previous example, we cannot make decisions by looking at the data itself. सिर्फ डेटा देख के हम लोग कोई डिसीजन नहीं ले सकते. जैसे एक एग्जांपल मैं एक लूँगी. कॉलेज का एग्जांपल ले लिया मैंने, तो उसमें सपोज द प्लेसमेंट सेल ऑफ कॉलेज हैज़ मेंटेन द डेटा फॉर 2000 स्टूडेंट प्लेस विद डिफरेंट कंपनीज एट डिफरेंट सैलरीज पैकेजेस इन द लास्ट 3 years. ओके, 3 साल से 2000 स्टूडेंट प्लेस हुए, तो ये डेटा इम्पॉर्टेंट है, बट नॉट नेसेसरी कि इसी डेटा से हम फाइनली कोई डिसीजन लेंगे. ओके, सो लुकिंग एट सच डेटा वन कैन नॉट मेक एनी रिमार्क अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज, राइट. द कॉलेज processes and analyzes the data and results are given in placement brochure of the college through summarization as well as visual for easy understanding. Okay, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे? समराइजेशन डेटा देखेंगे, समराइज डेटा देखेंगे उस कॉलेज का ब्रोचर देखेंगे. हैंस द डेटा नीड टू बी गैदर्ड, प्रोसेस एंड एनालाइज फॉर डिसीजन मेकिंग. So next one is what? In general, data is collection of characters, numbers and other symbols and represent values of some situations or variables. This is the data in your computer system, that is binary data that will be processed, and then we are able to read that data, okay, as a human understandable language after processing. So what's the involved? They involve different symbols, also characters, numbers, then variables, situations, अलग situations होंगे. Then data is plural and singular of word. Data is datum. Okay, datum से बना है data. Using computers, data are stored in electronic form because faster and easier as compared to manual data processing done by a computer. Faster, easier way से हम क्या करेंगे? उस डेटा को प्रोसेस करेंगे बार बार. ओके, इससे क्या होगा? हमारा जो मैनुअल डेटा होगा वो प्रोसेस हो जाएगा और लोगों को हम लोग दिखा सकते हैं फिर वो डेटा. वर्ल्ड वाइड वेब भी अवेलेबल होगा वो डेटा. ओके, the information and communication technology, that is ICT evolution led by computer, mobile and internet has resulted in generation of large volume of data and at a very fast pace. The following list contains some of the examples of data that can often come across. बहुत सारे डेटाज रहते हैं, ऑनलाइन डेटा, ऑफलाइन डेटा, डॉक्यूमेंटेशन, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस. देन बैंकिंग में जो डेटा रहता है, टिकटिंग डेटा और शॉपिंग डेटा जो बिल रहता है, नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस ऑफ एवरीथिंग, signals generated by sensors, satellite data including meteorological data, communication data, earth observation data. These are what? These are your data. Okay, then importance of data. अभी importance of data क्या है हमारे पास? डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? ह्यूमन बीइंग रिले ऑन डेटा फॉर मेकिंग डिसीजंस. नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स
The human rely on data, and according to the data only the decision will be taken. Okay, then besides large amount of data when processed with the help of computers shows possibilities or hidden traits which are otherwise not visible to humans. Otherwise sometimes what happens, some data are not visible to the user, hidden trends will be there. Okay, authorization is required for that purpose, only that data will be accessed by one of the person. Okay, when one withdraws money from ATM, the bank needs to debit the withdrawal amount from the link account. कि लिंक अकाउंट से ही हम लोग ATM में जाएंगे तब हमारा कुछ डेटा ट्रांजैक्शन लेके हम कुछ डिटेल्स ले सकते हैं, हमारे मनी ट्रांजैक्शन हो सकता है. ठीक है, सो द बैंक नीड्स टू मेंटेन डेटा एंड अपडेट इट एज व्हेन रिक्वायर्ड. The meteorological offices continuously keep or monitoring satellite data for any upcoming cyclone or heavy rain. Meteorological offices continuously keep on monitoring satellite data. Okay. मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर्स जो रहते हैं सैटेलाइट डेटा को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं फॉर एनी अपकमिंग साइक्लोन और हैवी रेन. वेदर फोरकास्टिंग देखते हैं ना, वो भी डेटा मेंटेन करता है. उसी हिसाब से समटाइम्स वो डेटा के हिसाब से ही हमारा जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता रहता है. उसी डेटा के हिसाब से फ्यूचर रहता है ना वो हमारे क्लाइमेट का, उस हिसाब से वेदर फोरकास्टिंग इज़ वन ऑफ द डेटा, दैट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ व्हाट डेटा. और फिर हमने क्या देखेंगे हम यहाँ पे, इन द competitive business environment it is important for business organization to continuously monitor and analyze market behavior with respect to their products and take actions accordingly. Okay, so besides companies identify customer demands as well as feedback and make changes in their products or services accordingly. तो ये यहाँ पे क्या करता है, कंपनीज में कस्टमर केयर होते हैं ना, वो कैसे डेटाज लेके रखते हैं, फिर उस हिसाब से हमारे फीडबैक्स रहते हैं, कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उस हिसाब से सर्विस अवेलेबिलिटी होता है. द डायनामिक प्राइसिंग concept used by airlines and railway is another example where they decide the price based on relationship between demand and supply. Okay, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हम रिलेशनशिप क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं एयरलाइंस में और रेलवेज में. ओके, द कैब बुकिंग ऐप इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड फॉर कैब्स एट अ पर्टिकुलर टाइम. ओके, द कैब बुकिंग एप्स इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड फॉर कैब्स एट पर्टिकुलर टाइम. वो भी एक तरह का हमारे मोबाइल में डेटा ही रहता है, उस हिसाब से हम कैब को बुला सकते हैं, बुक कर सकते हैं, उसकी प्राइस कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं. वो डेटा सारा हमारे गूगल मैप में सेव रहता है, उस हिसाब से कैब का डायरेक्शन देख सकते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी देख सकते हैं. ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है इंटरनेट पे. दिस इज़ वन काइंड ऑफ डेटा ओनली. देन सर्टन रेस्टोरेंट्स offer discounted price called as happy hours. They decide when the how many discount to offer the analyzing sales data at different time period. Okay, they decide when and how much discount to offer by analyzing sales data at different time period. Okay, अलग अलग टाइम पीरियड के टाइम पे वो डेटा अवेलेबल रहता है डिस्काउंट ऑफर में. Beside businesses, following are some other scenarios where data are also stored and analyzed for making decisions. Okay, द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. इसमें भी रिकॉर्ड रहता है, डेटा रहता है पूरा वोट कास्ट का. ओके, देन सब्सिक्वेंटली द वोटिंग डेटा फ्रॉम द मशीन्स आर accumulated to declare election result in short time as compared to manual counting of ballot papers, right? ये तो हमको पता ही है. मैन्युअली हम लोग वोट काउंट करेंगे, उससे अच्छा हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इज वेरी मच कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू द मैनुअल काउंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स. इसीलिए ये डेटा भी एक अवेलेबल है. देन साइंटिस्ट रिकॉर्ड्स डेटा वाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू कैलकुलेट द कंपेयर रिजल्ट्स. ओके, देन फार्मास्यूटिकल कंपनीज record data while trying out a new medicine to see its effectiveness. Okay, इसमें भी डेटा रिकॉर्ड करके रखता है, राइट. मेडिसिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ रहती है कस्टमर्स की, पेशेंट्स की, वो सारे डेटा हम लोग एक मैन्युअली कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं. कुछ मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो भी स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग.
ये भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिकॉर्ड स्टोर करके रखते हैं हम। लाइब्रेरीज मेंटेन डेटा अबाउट बुक्स एंड लाइब्रेरी एंड मेंबरशिप ऑफ लाइब्रेरी, ये भी एक डेटा है। द सर्च इंजन गिव अस रिजल्ट्स आफ्टर एनालाइजिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन वेबसाइट अक्रॉस वर्ल्ड वाइड वेब। सर्च इंजन हमारा गूगल, ओके, उसमें जो भी हम डेटा सर्च करेंगे दैट आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अक्रॉस वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, देन वेदर alerts are generated by analyzing data received from various satellite। वेदर अलर्ट्स मिलते हैं ना, वेदर फोरकास्टिंग, उसमें जैसे रहता है सारा डेटा स्टोर करके रहता है, वो सारा सैटेलाइट से मिलता है, वेरियस सैटेलाइट से। ओके, देन टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा में क्या देखेंगे हम? स्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या? डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड वेल फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज्ड रहता है, इसको स्ट्रक्चर्ड डेटा में बोलेंगे हम लोग। दैट इज इन टैबुलर फॉर्मेट, रोज एंड कॉलम्स में। Then format where each column represent different data for particular parameter called attribute, characteristics and variables, and each row represent data of an observation for different attributes। इसमें बहुत सारा डेटा रहता है, एट्रीब्यूट्स रहते हैं, रोज रहते हैं, कॉलम्स रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं। शो स्ट्रक्चर डेटा रिलेटेड टू एन इन्वेंट्री ऑफ किचन आइटम्स मेंटेन बाय अ शॉप। तो किचन में बहुत सारे आइटम्स रहते हैं शॉप में, ये सारे डेटा हम लोग क्या कहेंगे? एक स्ट्रक्चर्ड डेटा, वेल फॉर्मेट डेटा रहेगा। देन मेरे को यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा अबाउट किचन आइटम इन शॉप, ये मॉडल नंबर दिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, यूनिट प्राइस दिया, डिस्काउंट दिया, आइटम्स इन इन्वेंट्री, कितने आइटम्स अवेलेबल है, ये सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है हमारे पास। वेल फॉर्मेट टैबुलर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। Given this data using a spreadsheet or other such software, the shop owner can find out how many total items are there by summing the column items in inventory of table. The owner of shop can also calculate the total value of all items in the inventory by multiplying each entry of column 3 unit price with corresponding entry of unit 5 items in inventory and finding their sum। ओके, ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। 7.1 में दिया हुआ है, देखो यूनिट प्राइस दिया, उसका डिस्काउंट दिया परसेंटेज में, आइटम्स इन इन्वेंट्री, उससे हम इन्वेंट्री आइटम फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट प्राइस आइटम इन इन्वेंट्री, फाइंडिंग देयर सम कैसे करेंगे हम? 8 डिवाइड बाय 100 इंटू 126, कितना है वो आंसर? 23। ओके, ये हमारा इन्वेंट्री, आइटम्स इन इन्वेंट्री, ये फाइंड आउट करेंगे हम, ये दिया है यहाँ पे। Then attributes maintained for different activities, यहाँ पे देखो एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, बुक्स एट शॉप, डेटा फील्ड्स, पैरामीटर्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब क्या एट्रीब्यूट्स मेंटेन फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज में। आप एंटिटी बोल सकते हैं हम, या एक्टिविटीज़ बोल सकते हैं। बुक्स एट अ शॉप, और डेटा फील्ड पैरामीटर या एट्रीब्यूट क्या होंगे उसके लिए? बुक टाइटल, ऑथर, प्राइस, ईयर ऑफ पब्लिशन, क्या एट्रीब्यूट्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, स्टूडेंट का नाम होगा, ओके, और क्या होगा उसका कौन सी क्लास में, उसका फीस अमाउंट, इसका डिपॉजिट डेट, ये सारी चीज़ें हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। आप अपने हिसाब से एट्रीब्यूट्स क्रिएट सकते हैं पर्टिकुलर एंटिटी के लिए हम एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। देखिए दैट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? A newspaper contain various types of news items which are also called data। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या लिखेंगे हम लोग? A newspaper contains various types of news items which are also called as data। डेटा बोलेंगे हम उसको, various types of new items रहेंगे न्यूज़पेपर में। But there is no fixed pattern that a newspaper follows in placing news articles। न्यूज़पेपर में क्या रहेंगे? बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स रहते हैं, सो दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। बहुत सारा एक फॉर्मेट में रहेगा डेटा, जो भी रहेगा वो वेल फॉर्मेट में नहीं रहेगा, उसमें कुछ तो हम लोग डेटा अनस्ट्रक्चर्डली प्लेस किया जाएगा आर्टिकल्स में। वन डेटा देयर माइट बी 3 images of different sizes on a page along with 5 news items and 1 or more advertisements। ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है।
while on another day there might be one bigger image with three texture news items. So there is no particular format nor any fixed structure for printing news. Okay, so that is unstructured data. Another example is the content of an email. email का content रहेगा. There is no fixed atom structure. There is no fixed structure about how many lines or paragraphs one has to write with an email or how many files are to be attached with an email. ये सारी चीज़ें क्या रहती है? Unstructured data, no fixed structure. In summary, data is where is that the traditional or column structure is called unstructured. ओके, रो कॉलम में नहीं रहेगा डेटा तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और कौन सा रहता है पता मैंने आपको अभी. इसमें जो डेटा रहता है सब ईमेल्स में अलग अलग फॉर्मेट्स में रहता है डेटा. न्यूज़पेपर का डेटा रहता है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट्स रहेंगे उसमें, अलग अलग इमेजेस रहेंगे, बड़े बड़े इमेज, वो सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. एन एग्जाम्पल्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इंक्लूड्स वेब पेजेस कंसिस्टेड ऑफ टेक्स्ट एज वेल एज मल्टीमीडिया कंटेंट्स, इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो. ये सारी चीज़ें भी अनस्ट्रक्चर्ड में रहती है. अलग अलग साइजेस की इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो साइज, वीडियो फाइल, ये सारे ऑडियो वीडियो फाइल्स, ये सारे कंटेंट जो मल्टीमीडिया कंटेंट रहेगा वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आएगा. अदर एग्जांपल्स इंक्लूड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस रिपोर्ट, बुक्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, सोशल मीडिया मैसेजेस. Although there are ways to process unstructured data, we are going to focus on handling structured data only in this book. कि structured and unstructured data देख लिया हमने. Unstructured data are sometimes described with the help of some other data called metadata. Data about the data. एक ही data के अंदर और other data रहेंगे, that is your metadata. Then metadata is basically data about the data. For example, we describe different parts of an email such as subject, recipient, main, body, attachment, etc. These are the metadata for the email data. Likewise, we can have some metadata for an image file. metadata image file के लिए कैसा रहता है कि PNG में रहता है. इमेज टाइप कैसा रहता है? JPG PNG में रहता है. इमेज रिजोल्यूशन रहेगा. ओके, बाद में हम लोग देखेंगे डेटा कलेक्शन. For processing data, we need to collect or gather data first. Data collection में हम data collect करके रखेंगे. We can then store the data in the file or database for later use. Data collection here means identifying already available data or collecting from the appropriate sources. Suppose there are three different scenarios where cells in a glossary store are available. ये सारी data collection है, बहुत सारा data collect करके रखेंगे हम appropriate sources से. Okay, cells data are available with the shopkeeper in a diary or register. In this case, we should enter the data in a digital format. For example, in spreadsheet में सारा sales का data available होगा. Data are already available in digital format से in CSV format में data available रहता है. That is comma separated values. इसमें जो भी digital data format available, that is your data collection. The shopkeeper has so far not recorded any data in either form but wants to get a software developed for maintaining sales data and account. The software may be developed using a programming language such as Python, which can be used to store and retrieve data from CSV file or database management system like MySQL, which will be discussed further. The shopkeeper has no so far recorded data and data in other, but they wants to get software developed by maintaining sales data and accounts. That is your what shopkeeper जो भी data रहता है वो सारा collected data रहेगा. The software may be developed using programming language such as Python, which can be used to store and retrieve data from CSV file or database management system. CSV file और comma separated values में जो भी data रहेगा, that is what Python language में हम store करके रखेंगे. और retrieve कैसे करेंगे? CSV file से, या फिर data by database से retrieve करेंगे like MySQL, which will be discussed further. हम बाद में देखेंगे ये कि क्या रहेगा वो data. Okay, बाद में data is continuously being generated at different sources or interactions with digital medium or continuously generating huge volumes of data.
Hospitals are collecting data about patients for improving their services. ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेस रहेंगे हमारे पास. अवर इंटरेक्शंस विद डिजिटल मीडियम आर कंटिन्यूसली जनरेटिंग ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा. बहुत सारा डेटा हमारे पास रहता है, वो कलेक्ट करके रखेंगे हम डिफरेंट सोर्सेस से डिजिटल डेटा. हॉस्पिटल्स में जो भी डेटा कलेक्ट करके रखेंगे अबाउट पेशेंट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर सर्विसेज. शॉपिंग मॉल्स आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट द आइटम्स बीइंग परचेस्ड बाय पीपल. Shopping malls are collecting data about the items being purchased by people. जो भी हम लोग आइटम्स लेंगे परचेस करेंगे पीपल से, दैट इज शॉपिंग मॉल में. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डेटा कलेक्शन. ऑन एनालाइजिंग सच डेटा, सपोज इट हैपेंस दैट बेडशीट एंड ग्रोसरीज आर फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर. ओके, तो ये एनालाइज कर सकते हैं हम. एनालाइजिंग डेटा, कभी कभी बेडशीट लेते, कभी कभी ग्रोसरीज के कोई आइटम्स लेते. ओके, hence the shop owner may decide to display bedsheet near the grocery section in mall and increase the sales. Okay, likewise a political analyst may look at the data content in the post and messages at the social media platform and analyze to see the public opinion for the election में जो भी हम लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट करेंगे वो सारा डेटा कंटेंट करके रखेंगे हम. दैट इज व्हाट एनालाइज द डेटा. Organizations like World Bank and International Monetary Fund are collecting data related to various economic parameters from different countries for making economic forecast. Okay, organizations like World Bank and International Monetary Fund are collecting data related to various economic parameters from different countries for making economic forecast. इकोनॉमिक फोरकास्ट भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे. जैसे हम अलग अलग मॉनेटरी फंड देखेंगे, उसमें हम डेटा कलेक्ट करके रखते हैं. दस कलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक फोरकास्ट भी कर सकते हैं. उसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ में हम लोग क्या करेंगे, पैरामीटर्स स्टोर करके रखेंगे हमारे पास, जो भी इकोनॉमिक पैरामीटर्स होंगे वो. कि देन डेटा स्टोरेज. डेटा स्टोर किस में किया जाता है वो हमको पता है. नॉर्मल डेटा रहेगा हमारा, वो डेटा कहाँ स्टोर होता है. सबसे पहले तो डेटा प्रोसेस होता है, फिर वो सबसे पहले डेटा लेते हैं हम, इनपुट लेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे और फिर आउटपुट स्टोर करेंगे. ओके, और फिर वो रिट्रीव किया जाता है बाद में. कहाँ कहाँ डेटा स्टोर किया जाता है हमारा, हार्ड ड्राइव में, सॉलिड स्टेट ड्राइव में, सीडी डीवीडी टेप ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इस सब में डेटा स्टोर करके रखा किया जाता है. We store data like images, documents, audios, videos, etc. as files in your computers. Likewise, school hospital data are stored in data files. We use computers to add, modify or delete data in these files or process these data files to get results. कि रिजल्ट मिलने के लिए करते हैं हम ये सब. जो भी डेटा हमको मिलेगा स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इस तरह हम इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स और ऑडियो वीडियो में स्टोर करके रखेंगे. However, file processing has certain limitations which can be overcome through database management system. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम लोग डेटा स्टोर करके रखेंगे. ओके, सो ये सब डेटा है हमारा अभी का. बाकी की ये सारी चीज़ें इसमें हैं कि इसमें कौन से और डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं. मतलब मेनली इसमें डेटा कलेक्शन भी हो गया, डेटा स्टोरेज भी हो गया. ओके, फिर हम डेटा प्रोसेस कैसे करेंगे वो देखेंगे. रॉ डेटा एंड देन इंफॉर्मेशन डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है वो देखेंगे. स्टोरेज हो गया हमारा, कलेक्शन भी हो गया, फिर प्रोसेस कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग. जैसे यहाँ पे रॉ डेटा, नंबर्स, इमेज है, टेक्स्ट है, उसका डेटा प्रोसेस होगा. इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट, टेक्स्ट. देन इनपुट में क्या है, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, डेटा एंट्री, प्रोसेसिंग, स्टोर, रिट्रीव, क्लासीफाई, अपडेट. आउटपुट में क्या होगा, रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स, प्रोसेसिंग सिस्टम. डेटा प्रोसेस साइकिल होगा यहाँ पे, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. स्टेप्स इन डेटा प्रोसेसिंग. रॉ डेटा में नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज होगा. डेटा प्रोसेसिंग होगा, इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, टेबल के फॉर्मेट में, चार्ट के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन मिलेगी. इनपुट क्या है, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रिपरेशन, डेटा एंट्री. फिर प्रोसेसिंग में स्टोर, रिट्रीव, क्लासीफाई, अपडेट होगा. एंड फाइनली रिपोर्ट्स
फाइनली रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स एंड प्रोसेसिंग सिस्टम होगा, स्टेप्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। ये हो गया हमारा स्टेप्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। ओके, ये IFTP पे पूरा ये जो चार्ट है वो ड्रॉ करके आप लोग एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डेटा प्रोसेसिंग ये हम लोग बाद में देखेंगे, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस क्या है। ओके, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको बताया डेटा क्या होता है नॉर्मली, फिर बाद में मैंने आपको बताया इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, क्यों डेटा लिया जाता है, क्या टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, फिर हमने डेटा कलेक्शन देखा, हमने क्या डेटा कलेक्शन होता है ये हमने देखा। देन डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है वो भी देखा हमने। रॉ डेटा, डेटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये स्टेप्स है, ये सारे स्टेप्स आप ड्रॉ करके इसका एक्सप्लेनेशन लिख देना। द नेक्स्ट lecture we will see about statistical technique for data processing.